The next question which is before me is that whether a minor can sell out his property or not. The brief answer to this question is that he can't do so. Why? The puberty age of a son of any person is 18 years. As selling and buying in this way is a contractual obligation. So the person aging 18 years can do so only. If he is not the age of majority, 18 years, he can't make any contract or agreement whatsoever. Yes, he can do so for this purpose through next friend. He will have to institute a suit in the court of guardian. So from the court of law, after having had decree thereof, he will be in a position to sell out his property. So even he can't do so, but his guardian can do so. Court can ask the guardian to have the accounts of the property in question to be sold. ये जो ना सवाल पूछा गया है कि क्या जो नाबालिग है वो जायदाद बेच सकता है, इन ब्रेविटी मुख्तसर तौर पर इसका जवाब तो ये है कि नहीं। लेकिन फिर मैंने कहा कि हाँ बेच सकता है, उसके लिए क्योंकि ये कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, एक मुआहदा होता है, और पाकिस्तान में जो मेजर है एज ऑफ प्यूबर्टी है वो है 18 साल। 18 साल से या ऊपर का बंदा जो है वो ये मुआहदा कर सकता है, इससे नीचे वाला नहीं। इसके लिए थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड एक दावा करना पड़ेगा आपको गार्डियन कोर्ट में, जानशीनी का सर्टिफिकेट भी उसे कहते हैं, लेकिन वो तो होता है कोई डेथ वगैरह हो जाए। इसमें भी माइनर के लिए अब वो सूट करना पड़ेगा। तो अदालत अपने शवाहिद सबूत आप जब देंगे तो वो डिग्री जारी करेगी, तो उस वक्त फिर आप वो माइनर की जो जायदाद है वो बेच सकते हैं। अदालत जो है वो आपको कह सकती है कि इसका बाकायदा हिसाब किताब रखें, जो माइनर है उसकी तालीम व तरबियत, उसके अखराजात वगैरह वगैरह वो हर महीने भी कह सकती है कि अदालत में जमा करें, जो वो मुनासिब वक्त कहे। तो माइनर जो है वो नाबालिग वो तो कर ही नहीं सकता। तो उम्मीद है आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया हो। The next question what is before me is that the father is lunatic, but he is the owner of the property. We are 4 brothers and sisters. It is very difficult for us to have livelihood. What should we do under the circumstances? You will have to apply under Lunacy Act before a court of law. After having full satisfaction by calling doctors who will interview your father, then they will issue certificate laying down therein that no doubt he is a lunatic. So there is a procedure
and the court, after fulfilling that very procedure, then will take the accounts of the property of your father, and the same as I have answered the very question before this question, you will be having your livelihood or whatsoever property etc. ये जो सवाल मेरे सामने है जनाब, ये बयान किया गया है कि हमारे वाले साहब पागल हैं लेकिन उनकी जायदाद है, तो हम कोई बेचना चाहते हैं तो मसाइल आ रहे हैं, तो हम क्या करें। इसके लिए ल्यूनेसी एक्ट मौजूद है, आप सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये दायर करेंगे, जज साहब जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं उनको बुलाएंगे, आपके वाले साहब भी पेश होंगे, सवालात जवाबात के बाद अगर वो वाकई ल्यूनेटिक हुए तो फिर वो जो सर्टिफिकेट डॉक्टर देंगे उसकी रोशनी में प्रोसीजर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था माइनर का होता है, तो वो भी फिर इसी तरह का होगा। फिर जो उसका गार्डियन बन जाएगा तो वो हिसाब किताब रखेगा और सारा निज़ाम जो है वो वैसे ही होगा। The next question which is before me, what is the presumption regarding the child aging to 80 days? It's a very important question. In fact, it has been asked whether a child aging to 80 days, whether he can be termed as legitimate or not. The first night, if it is proved, both supposes, if a child who is born within 280 days, it will be not bastard but legitimate child, and it will be child of the person who has had relations with his wife. ये एक मुख्तसर सा सवाल पूछा गया है कि बच्चा जो 280 दिन के अंदर पैदा हो, क्या वो हलाली बच्चा शुमार होगा और उसका वालिद कौन वालिद होगा। अब एक्चुअली इसके अंडर हैंड उनके पूछने का मतलब ये था कि एक औरत है, उसकी शादी हुई और उसके बाद वो गलत काम करती रही, तो अब वो जो बच्चा है उसको किस तरह कहेंगे कि ये हलाली है। तो कानून की प्रिजम्पशन ये है कि जब शादी हुई उसके बाद 280 दिन के बाद वो बच्चा जिस बेड पर वो थे मियाँ बीवी, वो बच्चा पैदा हुआ, अब बच्चा वो लेजिटिमेट यानी हलाली तस्वुर होगा। उसके लिए प्रिजम्पशन है, आप जो भी कुछ कहते रहें, जो भी आप कहें, कानून सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, वो हलाली ही शुमार होगा। उम्मीद है मेरा जवाब आपको मिल गया हो। The next question which is before me, regarding the person who is unhurt, what does the law say regarding that very person? So it is very perplexing situation when any person is not hurt. What should be the presumption regarding that very person? So law presume the person who is not hurt of 7 years, he will presume to be dead. No, the circumstances show that the person hasn't come in his family even after 7 years. So after 7 years, he can be presumed as dead, and now all his property whatsoever
will be shared, will be distributed among the heirs. However, this very presumption is rebuttable. There is a possibility that a very person went to any country, went to any other city of the country, of his country, and he was detained in any jail, etc. After his coming, he is alive. No, all the circumstances, all the transactions whatsoever can be changed. So, your answer of this question is very much clear, that a person can be presumed, supposed to be dead after 7 years. جو سوال میرے سامنے موجود ہے اور جس کو میں نے انگلش میں ابھی کلیریفائی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص 7 سال ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے. اب وہ بیوی بچے کیا کریں، اس کی پراپرٹی بھی ہے اور سلسلے بھی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو قانون کہتا ہے کہ کسی بندے کو 7 سال ہو جائیں اور وہ واپس نہ آئے تو اس کو قانون جو ہے وہ ڈیڈ تصور کرے گا کہ ہی از نو مور ان دس ورلڈ، کہ وہ اب زندہ نہیں رہا. اب جو بھی اور سلسلے ہیں، کسی قسم کے مسائل ہیں، اس کی وراثت کے مسئلے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا نظام پھر اس کو ڈیڈ تصور کرتے ہوئے اس طرح کر لیا جائے گا. لیکن یہ ریبٹیبل پریزمپشن ہوتی ہے، یعنی قابل تردید قیاس ہوتا ہے. عام طور پر ہوتا ہے ایک شخص بیر ملک گیا اور وہاں قید ہو گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے محلے والوں کو پتہ نہیں ہے. اسی طرح اپنے ہی ملک میں کوئی شخص کسی دوسرے دور دراز صوبے میں گیا، وہاں جیل چلا گیا اور وہ 10 سال بعد واپس آیا. تو ان حالات میں سوال کا جو جواب ہے وہ تو اتنے کافی ہے کہ 7 سال بعد اسے مردہ تصور کیا جائے گا. امید ہے کہ آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا.